What we get in the frequency derivation? How can we represent frequency derivation? How can we represent frequency derivation? How can we represent frequency derivation? There are two different equations. First is del f equals to 1 upon 2 pi d phi by dt. Del f equals to 1 upon 2 pi d phi by dt. ठीक? Mention this equation as equation number. Mention this equation in equation number. लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन में कीजिएगा ना, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां छोड़ा ना उसके बाद कंटिन्यूएशन कीजिएगा. After continuation, this will equation number 3. Okay, this will equation number 3. No, this will equation number 3. Now, we know that message signal is represented as empty, and this empty will be very good, am cos 2 pi fm t. Very good. And what is the value of carrier signal CT? AC cos 2 pi. Acha. Here we need to represent the angle in terms of frequency and phase mode. Okay, in first unit or in second unit when we discuss angle modulation, so at that time the frequency at that time we doesn't consider the angle, that's why we consider the phase value as 0. But in this unit we need to consider the phase value, that's why we have to written angle in the form of 2 pi fct plus phi. Is it clear? Here angle is written in the form of 2 pi fct plus phi. Okay, now this 2 pi fct plus phi is the angle. Okay, is it clear? Okay. Now, in last lecture we already discussed that instantaneous frequency Fi equals to Fc plus del F. It means that before modulation, if the carrier frequency is Fc, so according to the changes in modulating signal, this del F will change continuously. Okay, it means that by using this equation, we can say this del F is directly proportional to empty after modulation. Okay, this del F varies according to instantaneous value of modulating signal. So we can write this del F as a function of empty. So if we eliminate this proportionality sign, so we can write it as del F equals to Kf into empty. Is it clear? This del F equals to Kf into empty. Write this equation as equation number. Write this equation as equation number 4, and write this equation as equation number 5. Write this equation as equation number 5. By using equation number 3 and equation number 5. This one and this one, this one and this one. By using equation number 3 and equation number 5, we can write 1 upon 2 pi d phi by dt equals to Kf into m of t. Is it clear? Now, what we can write here? d phi by dt equals to 2 pi into Kf into m. Is it clear? Okay. Now, if we integrate both sides, so here we will get phi equals to integration of 2 pi Kf into mt dt, or 2 pi Kf integration of mt into dt. This one is the value of phi, this one is the value of this. Is it clear? Note down. Phi equals to 2 pi Kf integration of mt dt. Now is it clear to all of you? Now,
after modulation, इसको बात नोट कीजिएगा, after modulation, after modulation, after modulation, after modulation, the frequency of carrier signal, the frequency of carrier signal, the frequency of carrier signal changes, the frequency of carrier signal changes, frequency of carrier signal changes according to modulating signal, according to modulating signal, according to modulating signal, and we will get a, and we will get a, and we will get a new modulated signal, and we will get a new modulated signal, we will get a new modulated signal. This modulated signal is represented as ST. This modulated signal is represented as ST, and here ST can be written as, and here ST can be written as, and here written as. Clear? Here ST can be written as ST equals to AC cos 2 pi FCT plus. ठीक है, की वैल्यू चेंज हो रही है, अब कितनी चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो ये phi की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ phi हियर, सो व्हाट वी विल गेट प्लस 2 pi kf integration of mt into vt close. No doubt. Here kf is frequency sensitivity. In second unit, when we represent Ka, then K is amplitude sensitivity. What is the value of K? 1 upon AC. What is the value of modulation index in the case of amplitude modulation? AM upon AC. Now here we need to extract the modulation index, same as we get the modulation index in the amplitude modulation. Okay. Now how can we calculate the modulation index? First, here we have to put the value of MT. What is the value of massive signal MT? What is the value of massive signal MT? AM cos 2 pi FMT. Now put the value of MT here. So what we will get? We will get ST equals to, we will get ST equals to AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integration of AM cos of 2 pi FMT. FMT dt. FMT dt. Now after solving this mathematical equation, we will get AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF. Now after integration, what we will get? Which one is the constant here? Which one is the constant term here? AM is the constant term here. So first we will extend the constant term to the outer side of the integration. Now after the integration of cos 2 pi FMT, what we will get? Sin 2 pi FMT. Sin 2 pi FMT. And what is the value of, and then when we integrate 2 pi FMT, so what we will get? 1 upon 2 pi. When we integrate this term, so what we will get? 2 pi FMT. So we will get 1 upon 2 pi FM in the outer side of the integration after the integration. So now this 2 pi and this 2 pi will cancel out. So what we will get? We will get ST equals to AC cos of 2 pi FCT plus KF into AM divided by FM into sine of 2 pi F and T. Note down. Note down. Yeah. Yes. Now, when we further simplify this equation,
So we can write, when we further simplify this equation, so we can write kf multiplied by am equals to del f. Del f can also be written as del f equals to kf multiplied by am. So multiplied by am. So here we have to write del f upon fm. So sine 2 pi fmt. We can write here sine 2 pi fmt. How many students are online now? How many students are online now? ठीक है, यहाँ तक समझ में है? Okay. So this one is the ideal equation. So this one is the ideal equation, or we can say this one is the generalized equation of FM signal. This one is the generalized equation of FM signal. It can be written as. It can also be written as. It can also be written as. It can also be written as AC cos of 2 pi FCT plus del F upon FM. Del F, the ratio of frequency deviation with the modulating frequency is known as modulation index in the case of FM. In some books, the modulation index is written in the form of beta. I am representing modulation index as M of F. Okay, so this one is the modulation index in the case of frequency modulation. In the case of amplitude modulation, the modulation index is written as M. So this one is the modulation index. Sine 2 pi f. So this one is the generalized equation. This one is the generalized equation for FM signal. This one is the generalized equation for FM signal. This one is the generalized equation for FM signal. Can anyone tell me what is the value of generalized equation in the case of AM signal? What is the generalized equation in the case of AM? Shubham, what is the generalized equation in the case of AM? In the case of AM, क्योंकि दिक्कत यही होती है बेटा, जब हम लोग बहुत सारी इक्वेशन पढ़ते जाते हैं ना, तो हम लोग प्रीवियस बोलते जाते हैं, तो हमको कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है, जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है ना, तो हमें सीधे सीधे ये इक्वेशन दे दिया जाता है। ध्यान देना सभी, हमें सीधे सीधे ये इक्वेशन दे दिया जाता है। हमें बोला नहीं जाता है कि दिस वन इज द एएम सिग्नल, दिस वन इज द एफएम सिग्नल, दिस वन इज द पीएम सिग्नल। तो आपके इसको देख के आपको आइडिया आइडेंटिफाई करना है कि दिस वन इज द एएम और पीएम, या है ना। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये सबका कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं जो लिख रहा हूँ वहाँ पे लिखना नहीं, बस रिकॉल कर रहा हूँ ना। In the case of amplitude modulation, the modulated signal SC can be written as AC 1 plus K अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए। KMT cos 2 pi, then cos of 2 pi FCT। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है अलग से? दोनों इक्वेशन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? जो भी हमारा एनालॉग, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। इक्वेशन देख के समझिएगा। नाउ अगर मैं कोई भी एक ऐसा मेंशन, एक सिग्नल मेंशन कर देता हूं, ध्यान देना सभी, मैं कोई भी सिग्नल ऐसा मेंशन कर देता हूं, 10 cos of 1000 pi t plus 1000 pi t 1000 pi t 1000 pi t plus 50 sin 100 pi t. Suppose any equation is given as modulated signal equation is given as st equals to 10 cos 1000 pi t plus 50 sin 100 pi t. So by
By observing it, by comparing this equation with the generalized equation, we can directly find out all the values. Okay, so first you have to find out the value of FC and FF. Okay, first by comparing this term and this term, you can easily find out the value of FC. This one, when you compare this term with this term, so what you will get the frequency, what will you will get the value of the carrier frequency FC? 500. What is the value of FM? 50. Now, what is the value of AC? AC equals to 10. What is the value of modulation index? 50. What is the value of modulation index? Clear? Now, find out the value of frequency deviation. Is it possible? Is it possible to calculate the value of frequency deviation? Yes, sir. Modulation index can be written as del F upon Fm. If modulation index value is given, it means that del F upon Fm value is given. So del F upon Fm equals to 50, and Fm is already we have calculated, so we can easily calculate the value of del. Okay, and that what is the value of del F? 50 in the terms of frequency sensitivity. How can we represent frequency deviation? Copy check कीजिए. del F को कैसे लिखना है? सुमित? Sir, frequency. हाँ सुमित बोलो बेटा. No, sir, frequency of the F2 minus F1. ठीक. F2 minus F1. और कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? In the terms of frequency sensitivity, how can we represent frequency deviation? Kf into m. Kf into m. We already represented somewhere. Del F equals to Kf into m. है ना? So if this one, if we know this one, we know this one, so we can easily calculate the value of frequency sensitivity. Clear है ना भाई सभी को? है ना? हर टर्म को एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए. यहाँ तक सभी को कंप्लीट हो गया. जनरलाइज्ड इक्वेशन सभी ने लिख लिया. अब एक पेज में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सभी का कंपैरिजन लिख रहे हैं. अब अच्छा मुझे बताइए, किसी के एग्जाम में कभी पूछा गया था कि what is the unit of frequency sensitivity? किसी एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था what is the value of frequency sensitivity, what is the unit of frequency sensitivity. So how can we calculate the unit of frequency? अलग पेज में लिख रहा है, ये सब हमारे चैप्टर से बाहर की बात है ना, ये सब आप लोग को रिलेट करना आना चाहिए. We know that del F equals to Kf into am. Del F क्या है? Frequency. This one is the frequency, so its unit will be. This one is the amplitude, so its unit will be volt. So what is the unit of Kf? Hertz per volt. Clear work? So this one is the unit of frequency sensitivity. Note down. जितने भी चीजें मेंशन कर रहा हूँ सबको कॉपी में नोट करते जाइए, आपके आगे काम आएगा. This one is the value of frequency sensitivity. आकाश, निर्भय, सुरभि, प्रतिभा, ऋषभ. ओके, नोट कर लिए सभी लोग यहाँ पे. और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं. Frequency deviation in the terms of instantaneous frequency. कॉपी में नोट कीजिए. Frequency deviation in the terms of instantaneous frequency. नोट डाउन. Frequency ये हमारे डेरिवेशन से बाहर है ना, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे डालने के पहले जो इक्वेशन लिखा था ना, उसका लाइन खींच लीजिएगा, वो क्लोज है. अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डिराइव द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो वहीं तक करेंगे. ये सब मैं आप लोगों को रिलेट करवा रहा हूं. What is the value of frequency deviation in the terms of instantaneous frequency? Fi equals to Fc plus so we can write here Fi minus Fc equals to del. नोट डाउन. कहीं कॉपी में नोट करते जाइएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो हमें ये सब पता होना चाहिए.
Now, how can we calculate what is the value of carrier swing? What is the value of carrier swing? 2 delta. Very good. Carrier swing. Carrier swing equals to 2 delta. Carrier swing equals to 2 delta. Twice of frequency deviation. Okay. Now, modulation index. Modulation index in the case of modulation index in the case of AM बताओ मुझे कॉपी में सब लोग अलग से लिखोगे modulation index in the case of AM clear modulation index in the case of FM is it clear this delta can be written as KF into AM divided by FM KF into empty max है ना KF into empty max क्योंकि जब empty max लिखेंगे ना तब हम उसका एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे अगर empty लिखेंगे तो पूरा cos वाला पूरा आ जाएगा doubt that now unit of frequency deviation hertz per volt unit of frequency sensitivity frequency sensitivity hertz per volt है because of kf into am पर अगर हम fi minus fc करेंगे तो हर्ट्ज में आएगा ना fi minus fc करेंगे तो del fi वो del f क्योंकि ये थोड़ी है वो del f yes both are different del f is frequency deviation kf is frequency sensitivity yes both are different clear okay इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं देखो इस टाइप से सामने देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं सपोज if the carrier frequency get doubled if the carrier frequency get doubled in FM modulation so what is its effect in the modulation index मैं फिर से बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ if the carrier frequency get doubled so what is its effect in the modulation index कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब बेटा क्या कहीं पे भी इसके इक्वेशन में fc दिख रहा है आप लोगों को तो fc को मैं 5 गुना करूं 20 गुना करूं कुछ भी कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें नहीं पड़ेगा तो बस ये ध्यान रखना है ना if the frequency of Mason's signal is half so what is its effect in the modulation index तो क्लियर इक्वेशन याद रखना बेटा ना हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करके आना पता होना चाहिए ठीक सो मैं पूछ रहा हूं no चलो सो दोनों में अलग-अलग इक्वेशन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया डेरिवेशन हो गया बेस क्या सकते हैं चलो कुछ न्यूमेरिकल्स नोट डाउन कुछ न्यूमेरिकल्स नोट कीजिए the instantaneous frequency of single tone FM signal. What is the mean of single tone? When there is only one message signal that is transmitted from the transmitter, so this type of modulation is known as single tone modulation. The instantaneous frequency of a single tone FM signal varies between 95.95 megahertz 95.95 megahertz and 96.05 megahertz 95.95 megahertz and 96.05 megahertz full stop. The modulating signal frequency is 2 kilohertz
The modulating signal frequency is 2 kilohertz. The modulating signal frequency is 2 kilohertz. So calculate the value of calculate the value of carrier frequency. So calculate the value of carrier frequency. Frequency deviation, first carrier frequency, second one frequency deviation, third one carrier swing, and the fourth one modulation index. There are the 4 different things that you have to calculate. First one carrier frequency, I think. Second one is the frequency deviation. Third one is the carrier swing, and the last one is the modulation index. First of all, what is this 95.95 and 96.05? Very good. कैसे इसको FI क्यों बोला मैं? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैंने आप लोगों को सीधे बताया बेटा हर चीज रटोगे कुछ भी नहीं। जो चेंज होने के बाद जो फाइनल वैल्यू तक पहुंच रही है बेटा या मिनिमम वैल्यू तक पहुंच रही है वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसा समझो आप। चेंज होने के बाद जो बनती है वो है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। चेंज होने के पहले जो रहती है वो होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी। जितना चेंज होता है वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। Clear? Here in this question only it is given that the modulated signal changes from 95.95 to 96.05. ठीक? So Fi max equals to 96.05. Fi min equals to 95.95. And we know that Fi max equals to Fc plus del F max, and Fi min equals to Fc minus del F min कह सकते हैं। तो जब मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करूंगा तो एक बार मुझे Fc मिल जाएगा और एक बार मुझे del F मिल जाएगा। So when we get the del F, so easily we can calculate the carrier swing also, and when we know that carrier swing and we calculate the frequency deviation, so easily we can calculate the modulation index too. Okay, so calculate all the values. Calculate all the values. Calculate all the values. और जिसका भी आंसर आएगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा, आंसर कोई बोलेगा नहीं। I think everyone has calculated. सभी के पास कैलकुलेटर है? कल से लाओगे बेटा, इस तरह से है ना? बेस का नहीं है? अभी हम बेस का उसके सेवन के बाद भी करना, 6 के बाद देख सकते हो, लेकिन मत बेचना, डेट में भी काम आएगा, है ना? कभी भी एग्जाम में स्टेप डिवाइड करना सबसे पहले तो क्या करिए, सबसे पहले गिवन दैट जो पैरामीटर्स दिए हैं x गिवन दैट क्या करना है, में मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है उसके सामने क्वेश्चन। क्लियर है? तो जितने फॉर्मूलेस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को टेबल मतलब फॉर्मूले को उसको बॉक्स में कवर करो, उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो, कोई भी दिक्कत आए ना हो, लेकिन ट्राई करो। समझ रहे हैं? सबसे पहले जिसको नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले लिखिएगा गिवन दैट क्या गिवन है, सबसे पहले बोलिए। जब टाइम चलाएंगे ना तो सब बनेगा, धीरे-धीरे स्टार्ट करो बस। किसी का भी आंसर आएगा कोई बोलेगा नहीं तो आप बताइए। तो करेक्ट है क्या? अभी इसको पूरा निकालो सब एक साथ। यस सर। और सुनो जहां पे भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में कवर करो, क्योंकि जब हम लोग आंसर शीट चेक करते हैं ना स्कैन वाली, तो जो हाइलाइटेड है ना वो चीज दिखता है, तो जो भी आंसर है उसको हाईलाइट करो बॉक्स में कवर करो। अच्छा, जितने स्टूडेंट मेरे अभी ऑनलाइन है किसी ने सॉल्व किया क्या? How many of you are online now? कितने लोग अटेंडेंस लेके चले गए, कितने लोग स्टिल ऑनलाइन?
आकाश, निर्भय, सुरभि, प्रतिभा, ऋषभ। ठीक है, आकाश तो हमने आकाश सॉल्व करो बेटा जो मैंने क्वेश्चन अभी कहा। क्वेश्चन the question that I have given here, क्या क्या उसमें given है? given है उसमें fi min is given as 95.95 megahertz. fi max equals to 96.05 megahertz. These all are given in the question. FM कितना given है बेटा? 4 kilohertz, 2 kilohertz, 2 kilohertz modulated signal. These three are given. So we know that, है ना? उसके बाद हम लोग जानते हैं, we know that और अच्छे कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले डेल एफ कैलकुलेट करना है. We have to calculate the FC also, and we also calculate the modulation index. These two we need to calculate. So we know that again चलो सॉल्व करो आप लोग. We know that Fi max equals to del F, FC plus del F. Fi min equals to FC minus del F. Equation number 1, equation number 2. A plus B. So what we will get? Fi max plus Fi min. Equation number 1 plus 2. When these two are added, so we will get y of FC. So FC equals to Fi max plus Fi min divided by 2. So by using this relationship, you can easily calculate the value of the carrier frequency. Now, how can we calculate the other parameters? So to calculate other parameters, we subtract equation number 1 with equation number 2. So when we subtract equation number 1 with 2, so Fi max minus Fi min, we will get 2 del F. So del F equals to Fi max minus Fi min divided by 2. So by using this equation, you can easily calculate del F. You can calculate these two terms here. Now, how can you calculate the value of MF? We know that modulation index MF equals to del F upon FM. By using this relationship, you can calculate del F, and this FM value is already given in the question. ठीक, आंसर आगे कितने लोगों का हाथ नहीं? ठीक. अब सबसे पहले अभी आप बताइए आपका आंसर क्या है? del F equals to 0.05 megahertz और FC equals to 96 megahertz. Modulation index कितना? 25. Sit down. शुभम, गौरव, और बेटा और किसी का इधर सेम है? चलो देखिएगा वो तो ये बोल दिया है एमएफ जो निकाली है वो भागा पर नहीं आया ना, मतलब तो बिना यूनिट क्लास नहीं तो यूनिट क्लास होगा इंडेक्स है ना यूनिट हमारी कट जाएगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारी यूनिट लेस होता है ना डेल एफ अपॉन एफ. ठीक है, these are the answers. del f equals to जितने बच्चे भी ऑनलाइन वो भी देख लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी लोग. del f equals to 0.05, fc equals to 96 megahertz and mf equals to 25 only. Then these are the values. ठीक है, I think clear हो गया सभी को. कुछ दिक्कत आज की क्लास में समझ आया सभी को? Next lecture we will discuss some more numericals along with we will start the derivation of frequency phase derivation and phase derivation. Thank you so much.
जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सब लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।